Hello friends and welcome to the daily current affairs discussion. So today is Thursday and I Snigdha will be discussing the current affairs related to international relations portion, right? So the important topics that we are going to discuss today are these two. India ASEAN first defense meet has happened, so this is a very crucial for your examination point of view. As a point you can mention it in your answers, as well as India ASEAN का पूरा topic we have discussed in the 32nd week of our discussion, right? This is the 40th week when we are discussing the IR current affairs. In the 32nd week I discussed India ASEAN relations in great depth. Please go back to that video also and try to check that, right? So इससे ही related you can say a latest development that India ASEAN relationship has seen, that we will be discussing today. Then the second topic of discussion today will be India UAE talks on food security. Again, very important topic. India UAE relations as such are very important for you people, for any examination that you are sitting for, especially for सब्जेक्टिव आंसर्स, ठीक है, जिसमें आंसर्स लिखने होते हैं आपको, उनमें इंडिया यूएई रिलेशंस आईआर के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो दिस आइडिया इज रिलेटेड टू द I2U2 forum, again a very crucial forum that we will discuss briefly in this discussion, right? So let's begin. Vaibhav, good afternoon. Everyone who is joining us, a very good afternoon. Let's begin the discussion. So as I told you that this is the ASEAN India Defense Ministers meeting, right? ASEAN grouping and India, they have come together, their defense ministers have come together to discuss the security concerns, common security concerns, right? पहले before we get into the depth of the topic, let's just see what are ASEAN nations, जिसको you know the people who are watching this for first time, you should know firstly what are ASEAN nations. जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, if they want to they can answer in the comment box whatever country that you are aware of in the ASEAN. Tell me in the comment box what do you think are the member countries of ASEAN. The full form of ASEAN goes like this: Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations. Yes, Kanu, you can tell me the members exactly also. So it is a grouping of 10 nations basically falling in the Southeast Asian region, right? 10 member nations are there. So these are the member nations that are represented here except India. All of these are the members of ASEAN, right? So it includes countries of Indochina. इस region को Indochina region भी कहा जाता है. You might have heard about that, right? India और China के बीच में this region falls, Indochina region भी कहा जाता है. So ASEAN के member nations क्या क्या हैं? Cambodia, Laos, Vietnam, right? Thailand, Malaysia, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है. मेंबर्स याद रखिए. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन आसियान, क्योंकि 10 ही मेंबर है एंड ये बहुत ही क्रूशल यू नो ग्रुपिंग है इंडिया के पर्सपेक्टिव से. तो आसियान के मेंबर्स आप याद रखिए. आसियान का हेडक्वार्टर, कैन यू टेल मी दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान एज अ ग्रुपिंग? द हेडक्वार्टर्स, राइट? सो ये सब बेसिक डिटेल्स आप याद रखिए, आपको क्वेश्चंस में काम आएगा. Vaibhav, we can discuss all these issues. You can you know call us and contact with me or any other teacher that you want to. We can discuss all these details, but not in this session. So Kanu is saying Myanmar, Thailand, Laos. Yes, you are right.
So all these members that are displayed here, all these countries are members of ASEAN. The headquarter is in Indonesia. The Indonesian city of Jakarta houses the headquarter of ASEAN. ठीक है, तो ये factual details अपने पास लिख के रखिए. Question can be asked and you will be easily able to answer it. Right? Now India is trying to connect with these countries. Right? Try to think that why do you think that this region is significant for India? We are talking about this land, these countries, right? India is here and India is coming in cooperation with these countries. The defense ministers of all these countries will be cooperating with each other and with India to handle the common security interests, right? Can you think of any particular reason that why this region is going to be very significant for India? ठीक है, ये हम बहुत बार ये डिस्कशन कर चुके हैं. हमारे इंडो पैसिफिक की डिस्कशन में हमने डिस्कस किया, इंडिया वियतनाम की डिस्कशन में हमने डिस्कस किया, इंडिया आसियान दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसमें हमने डिटेल में ये डिस्कशन कर चुकी है, राइट? नाउ आई वांट यू ऑल टू गिव द इनपुट्स. टुडे द सेशन इज गोइंग टू बी मोर फ्रॉम योर साइड. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस. So you tell me that what is the first major reason that this area holds significance for India, right? If I ask you the significance of ASEAN for India, of ASEAN nations for India, of ASEAN as a region for India. Yes, you are giving very good answers. Investments, Act East policy, trade routes, security. Very well, very well. So you see, the very first reason that why this region is very important for India is that it is located at the hub of the trade routes. You see, this is the important strategic Strait of Malacca. सबको पता है ये important Strait of Malacca है. आपका जितना इंडियन ओशियन से ट्रेड निकलता है, मेजॉरिटी ऑफ इट पासिस थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. ठीक है, यहाँ से जितना ट्रेड जाएगा इस पार्ट ऑफ द रीजन से वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होके जाता है. यहाँ से प्रेफर्ड ट्रेड रूट्स नहीं है. मेजॉरिटी ट्रेड पासिस फ्रॉम दिस रीजन बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिक्योर एंड शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, सो यूजुअली आप देखेंगे कि मेजॉरिटी इंटरनेशनल ट्रेड पासिस थ्रू दिस रीजन, राइट? नाउ दिस रीजन इज headed by or surrounded by these ASEAN nations, right? So to preserve the freedom of these trade routes that are passing through these strategic choke points, right? इसे choke point कहा जाता है. Why? When if anybody is able to choke this movement point, अगर किसी ने यहाँ पे movement trade की बंद कर दी, they can stop the movement of trade throughout this part of the world, right? So this is a very crucial point. So that is why these countries are head of are sitting at the head of this strategic choke point. So to maintain free trade through Indo-Pacific, through this region, it is very important that all the other countries like India, like China, like USA should have good relations with the ASEAN nations. ASEAN nations are important to maintain freedom, neutrality of the strategic choke point, that is Strait of Malacca, right? So firstly, that is the reason that India focuses a lot on its ties with ASEAN, right? Now the second significance of ASEAN for India is India can sell lot of goods and services to ASEAN. That means ASEAN can act as an important trade partner for India, right? अब देखिए इंडिया में स्पेशली सर्विसेज को सेल करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है. इंडिया में देर आर एडुकेटेड इंजीनियर्स, देर आर हाईली एडुकेटेड डॉक्टर्स, देर आर हाईली एडुकेटेड टीचर्स, CAs, accountants, lawyers, right? So there are a lot of services that India can sell to these
ASEAN nations who are, you know, in the need of these services, right? In that way, India will be able to earn money from these countries and will also be able to provide employment to its own youth, right? Trade in services is very crucial for India, as it will provide forex reserve to India and it will provide jobs to the youth of India, right? And for this purpose, ASEAN is an important target nation that can act as a market for Indian services exports, right? So that is why secondly ये इसीलिए important बन जाता है. First point हमने trade routes वाला discuss किया था. Important trade route, that is strategic Strait of Malacca, is being somehow controlled by the ASEAN region, right? The countries like Indonesia, Singapore, Malaysia, they are at the head of Strait of Malacca, so they can very well control the movement of vessels through this strategic choke point, right? Thirdly, the third important significance of ASEAN for India is countering China. Countering China. Now you see, China is becoming a great power in the world today. China is the second largest economy of the world, only after USA, right? China is also a great military power of the world, ठीक है? So इस वजह से China's power has grown exponentially. Now China has started asserting its dominance over the entire region, right? चाइना अब सुपर पावर बन गया है. चाइना को किसी का डर महसूस नहीं होता. स्पेशली दी स्मॉलर कंट्रीज आर नथिंग in front of the might that China has attained, right? So अब China, whenever it acts in this region, it does not take care of the interest of these smaller nations. इसीलिए South China Sea, this area that you are seeing, let me just make it more clear for you. This area that you are seeing here, that is South China Sea. Here increasingly we are seeing that China is asserting its dominance. China tries to claim majority of the area that is falling in South China Sea, whereas all these countries, they have equal claims in this area. ठीक है? South China Sea, देखिए, I'll just clearly draw it for you. South China Sea एक central sea है, which is rich in resources, which is rich in minerals, oil, gas, fisheries, right? Rare earth elements, you can say, polymetallic nodules, right? There are a lot of resources that are there in South China Sea, right? Now what is happening? South China Sea की boundary पे various countries are there. China is there, Vietnam is there, right? Singapore is there, Malaysia is there, then Indonesia is there, then Brunei is there, Philippines is there, right? Now multiple countries are there at the borders of South China Sea. Now all of these countries claim, you know, overlapping claims they have on the South China Sea. China कहता है majority of the portion जो इसने अपनी 9 dash line बनाई हुई है in the South China Sea, this is the South China Sea, China has drawn a 9 dashed line saying that this entire region that is falling in the 9 dashes, that belongs to China, right? Whereas all these countries, they also have claims over the South China Sea. So इसी वजह से what we are seeing that the ASEAN region is witnessing increasing assertiveness, increasing dominance from China, जिसकी वजह से ASEAN countries are very worried about their future interest. ठीक है, उनको ये सब चीज़ें चाहिए, minerals चाहिए, fisheries चाहिए, oil, gas, they all need this for their economic growth and development. But China is not allowing these countries to have
the rightful access to their area in the South China Sea, right? So that is where also the interest of India and ASEAN meets, because ASEAN countries, they also want to counter the rising influence of China, and India also wants to counter check China, which is growing in power and dominance in the entire South Asian region. ठीक है, सो इसी वजह से चाइना एक कॉमन थ्रेट है इंडिया के इंटरेस्ट के लिए भी, आसियान के इंटरेस्ट के लिए भी, राइट? सो उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए भी दोनों रीजन्स, इंडिया और आसियान जो हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, राइट? राइट, सो दैट इज द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया. Also, as you are also suggesting the development of northeast. See, our northeastern region, it is very well connected to the ASEAN regions, right? If you want northeast to grow, you can indulge in trade with this region. तो northeast में आप products बनाएंगे, services generate करेंगे, and then you will be able to sell those goods as well as services to the ASEAN countries. ठीक है, तो अगर आप आसियान के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अगर इंडिया मेंटेन्स गुड रिलेशंस विद आसियान, इंडिया विल बी एबल टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट? इंडिया विल बी एबल टू जनरेट बिजनेस फॉर नॉर्थ ईस्ट companies. India will be able to provide jobs to the northeast youth in the ASEAN nations. So educational exchanges हो सकते हैं, employment exchange programs हो सकते हैं, skill training programs दोनों regions के बीच में हो सकते हैं, right? That is why to develop northeast also India needs to strengthen its ties with ASEAN, right? आप imagine करिए कि अगर ये disturbed रहे region, अगर यहाँ वायलेंस रहे, तो क्या हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो सकता है? नहीं, because this disturbance will spill over to northeast also, the violence will spill over to northeast also, right? So इस हमारे नॉर्थ ईस्ट की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, we need the support and cooperation of ASEAN nations, especially the ones that are very nearer to our border, राइट? सो इसीलिए भी आसियान इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो बेसिकली आसियान की सिग्निफिकेंस आपको समझ आई इंडिया के लिए. दैट इज वाई इंडिया कीप्स एंगेजिंग विद आसियान लीडरशिप इन डिफरेंट वेज, एंड द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ दैट कोऑपरेशन इज, दैट एंगेजमेंट इज दिस इंडिया ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, राइट? Because India needs ASEAN for its security and prosperity purposes. That is why India has now decided to take the relationship forward, and India has started its first, this is the first India ASEAN defense ministers meeting, right? ये आप देखिए, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ इज देयर, एंड same there, his counterparts from all the ASEAN nations can also be seen in this picture, right? Now what will these leaders do, right? They will sit together and talk about the common security issues. They will sit together and try to cooperate on common security issues, right? Security issues कैसे कैसे हो सकते हैं? Security issues can be various in these areas. Piracy can be there, terrorism can be there, Chinese dominance can be there, the issue of migrants like Rohingya migrants is a very important issue common to India and ASEAN nations. बहुत ASEAN countries भी refugee influx की वजह से impact हो रही हैं रोहिंग्यास की influx से, and India, Bangladesh, all these countries are also getting impacted, right? So that also raises security concerns for both the sides. That is why वैसे इन सब टाइप के security issues पे the two sides will sit together in the form of India ASEAN defense ties, ठीक है?
So that is the significance of this meeting. Let's see some factual details, right? So first India ASEAN defense ministers meeting has held, right? This was the first such meeting that was held between India and ASEAN leaders, and it was held in Cambodia, one of the ASEAN city, right? It is, this meeting held in the, on the 30th anniversary of Indo-ASEAN relations, जिसे इंडिया आसियान ईयर ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जा रहा है, राइट? दिस की टर्म ऑल्सो यू शुड रिमेंबर. कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दे कैन आस्क दैट विच ईयर वाज द इंडिया आसियान ईयर ऑफ फ्रेंडशिप. इट इज़ दिस 30th ईयर ऑफ 2022. 30 साल हो गए हैं इंडिया आसियान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की एस्टैब्लिशमेंट को, एंड इन दिस ईयर वी हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड आवर फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर्स मीट. ठीक है, सो ये रिलेट करके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट अबाउट आसियान, द लेटेस्ट डेवलपमेंट, राइट? एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडिया आसियान रिलेशन इज दैट the relationship has been upgraded to the comprehensive strategic partnership level in November 22 itself. अभी recently ही for second week of November में इंडिया आसियान रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे अपग्रेड किया गया था, राइट? सो यू सी, whenever you see two regions or two countries interacting with each other, they gradually develop closeness in their ties, right? They gradually develop depth in their ties. ठीक है, जैसे आप देखिए, आपका फ्रेंड हो सकता है, डियर फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, राइट? सो यू ग्रेजुएट इनटू एन रिलेशनशिप, राइट? आपका ट्रस्ट ग्रो होता है, आपके एरियाज ऑफ कोऑपरेशन दे इंक्रीज, राइट? इनिशियली यू स्टार्ट कोऑपरेटिंग मे बी इन एजुकेशन, देन यू स्टार्ट कोऑपरेटिंग इन योर फैमिलियल मैटर्स ऑल्सो. ठीक है, जब दोस्ती गहरी हो जाती है, राइट? In the similar fashion, when two countries or two regions are involved, there can be different levels of cooperation that can be there, right? So इसीलिए आप partnership हो सकती है, normal partnership हो सकती है, then strategic partnership में convert हो सकती है वो normal partnership, and then it can further get elevated to the comprehensive strategic partnership. Right? So in all these levels, the depth of the relationship increases, the trust between the two parties increases, the mutual interest that are involved, ठीक है, एक दूसरे से जो वो benefit ले सकते हैं वो increase होता रहता है, उसकी understanding दोनों countries के बीच में increase होती रहती है. So comprehensive strategic partnership is one of the highest level of relationship that the two countries or two regions can have, right? So ये comprehensive strategic partnership अब दोनों regions के बीच में है, मतलब इंडिया और आसियान के बीच में है. That shows that the relationship has grown tremendously over the years, right? Now India and ASEAN both are realizing the importance of this bilateral relationship, and thus they have decided to strengthen their partnership to elevate their relationship to the level of comprehensive strategic partnership. ठीक है, इंडिया आसियान रिलेशंस पे आपको नोट लिखना कभी भी आ सकता है. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज बेसिक्स. ठीक है, आसियान इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया इन वेरियस वेज एंड इंडिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर आसियान इन दी सिमिलर वेज. ठीक है, आसियान को भी ट्रेड मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, नो हाउ मिलेगी, चाइना को काउंटर करने के लिए एक पावर, एक दोस्त मिलेगा. ठीक है, सो इसीलिए इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बोथ कंट्रीज हैव अपग्रेडेड देयर रिलेशनशिप टू comprehensive strategic partnership, and now they have also established their first defense ministers meet, and it is hoped that this will be regularly conducted between the two parties, right? ताकि security concerns हर year या हर regular intervals पे डिस्कस किए जा सके.
राइट। सो अपने इंडिया आसियान के नोट्स में ये पॉइंट्स दोनों ऐड करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने आंसर्स में मेंशन करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर राइटिंग दीज न्यू फ्रेश डेवलपमेंट्स दैट द इंडो आसियान रिलेशनशिप हैज़ विटनेस्ड। नवंबर 2022 में ही हुआ है, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग अबाउट इंडिया आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट। अब इस मीटिंग में the defense ministers, they came out with some initiatives, right? So those two important initiatives that the defense ministers came out in this meeting are these two. The first initiative is India ASEAN initiative for women in UN peacekeeping operations, right? ठीक है, इंडिया आसियान मिल के यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जो विमेन है उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट पे वर्क करेंगे, राइट। इसके बारे में भी हम बाकी सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी द स्कोप ऑफ सेशन डज नॉट अलाउ मी टू डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल, but you can go back to the previous Thursday discussions, you will find this in one of the discussions. So UN peacekeeping force में जितने भी विमेन सर्व कर रही हैं इंडिया में से या आसियान नेशंस में से, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए जॉइंट कोर्सेज चलाए जाएंगे, उनके इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए कोऑपरेशन आगे बढ़ाई जाएगी, राइट। सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट इनिशिएटिव इज़। सेकेंड इज, ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, सिर्फ ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स सो दैट यू कैन मेंशन इन द आंसर। जब आपको ग्रेविटी दिखानी है कि इंडिया आसियान के रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आप कैसे दिखाएंगे? यू जस्ट मेंशन कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है नवंबर 2022 में, दैट शोज दैट द रिलेशनशिप हैज़ ग्रोन। देन फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हो गई है, right, again shows that the relationship is growing. Then in this defense ministers meeting, both countries have taken new initiatives also for UN peacekeeping operations से related and plastic pollution को manage करने से related, right? इस तरीके से just remember the names, ज़्यादा details आपको एक एक डिटेल नहीं करनी है इन initiatives की, just know that in these areas the two sides are cooperating, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक पॉल्यूशन भी ओशियन नेशंस के लिए, सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, राइट। गार्बेज के बड़े बड़े पैचेस बन गए हैं जो कि इनकी इकोनॉमीज को इम्पैक्ट करेंगे, टूरिज्म को इम्पैक्ट करेंगे, मरीन हेल्थ को, मरीन इकोलॉजी को इम्पैक्ट करेंगे। सो प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ कॉमन थ्रेट टू द इंटायर ह्यूमैनिटी, मोर सो टू द कोस्टल नेशंस, ठीक है। तो आसियान आप देखिए मोस्टली कोस्टल कंट्रीज है, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गया, सब सीज में, ट्राई टू रिमेंबर देयर लोकेशन। सी ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड इन दीज वाटर एरियाज, राइट। ये देखिए आप फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, राइट, इंडिया। सो ये सब प्लास्टिक पोल्यूशन के शिकार हो रहे हैं, इनकी इकोनॉमी सफ़र करेंगी, इनके फिशरमैन सफ़र करेंगे, इनकी कोस्टल पॉपुलेशन सफ़र करेंगी प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से, राइट। सो दैट इज़ वाई द टू साइड्स हैव डिसाइडेड टू कोऑपरेट ऑन मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल ऑल्सो, राइट। सो बस ये 2 पॉइंट्स याद रखिए, डिटेल्स यू डू नॉट हैव टू गो टू, बस ये 4 पॉइंट्स इस डिस्कशन में अपने पास लिख के रखिए। वेन एवर देर इज़ अ क्वेश्चन ऑन इंडो आसियान, जस्ट मैंशन दीज पॉइंट्स, यू आर गोइंग टू फेच गुड मार्क्स, राइट। मतलब बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करने हैं आपको, दीज यू हैव टू एड ऑन एज द न्यू फ्रेश पॉइंट्स टू योर आंसर, right? So that is how this India ASEAN meet, defense ministers meet, is very important for you, right? This is all that we have discussed, the significance of India ASEAN relations. Both regions want that rule based order is followed in Indo-Pacific. कोई भी एक कंट्री डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए,
like China is asserting itself and it is not respecting the rules of international bodies, right? China ने बहुत जगह पे international bodies ने जो rulings दी है उसको मानने से मना कर दिया है, right? That means China is not following the international rule of law. So this is an issue that is being fought by India and ASEAN collectively, right? That is why it is said that the significance of the tie is to establish rule based order in the Indo-Pacific. All countries should conduct their affairs according to the international rules and regulations and not according to their own whims and fancies, right? That is the first significance. Blue economy, जैसे मैंने आपको बताया, इन साउथ चाइना सी हो, अरेबियन सी हो, इन सब वाटर बॉडीज में देयर इज रिच प्रेजेंस ऑफ ऑयल, ग्रास, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, राइट, फिशरीज. So all of these can be extracted for a country's economic growth, for creating jobs, for the creating wealth for the fishermen, for the coastal communities, and that is what is the idea of blue economy. So दोनों इंडिया एंड आसियान मिलके ये ओशियन के रिसोर्सेज को भी सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट करने में कोऑपरेट कर सकते हैं, right? Like Kanu is giving us an example that an Indian company is established in Philippines for extracting oil, right? So इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और फिलीपींस को भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फिलीपींस इज गेटिंग फ्रॉम इंडिया, राइट? सो दोनों ही जो साइड्स हैं, दोनों पार्टीज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस टाइज, राइट? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लू इकोनॉमी के बेनिफिट्स को लीवरेज करने के लिए इंडिया और आसियान की कोऑपरेशन इज वेरी सिग्निफिकेंट, राइट? द थर्ड is energy security. Most of these ASEAN countries, they have rich oil and gas resources which India can leverage. Vietnam ho, Philippines ho, all these countries, they house reserves of oil and natural gas, so that also can be exploited by India, and that is why again ASEAN is very important for India, right? Then India की Act East policy, उसको implement करने के लिए अगेन आसियान इज इम्पॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए, राइट? अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ट्रेड रूट्स की सिक्योरिटी के लिए आसियान इज इम्पॉर्टेंट. देन टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स इन दीज रीजन्स, अगेन द बायलैटरल टाइज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है? सो ये सब आप सिग्निफिकेंस पॉइंट्स लिख सकते हैं दोनों रीजन्स के बीच में, राइट? दिस इज द इंटायर इंडो पैसिफिक दैट वी वर डिस्कसिंग, राइट? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज हेयर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में सैंडविच्ड है. जितना भी आपका ट्रेड ऑयल यहाँ से मूव करता है, मेजरली इट पासिस फ्रॉम दिस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है? सो ये आसियान कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. साउथ चाइना सी यू कैन सी हेयर, राइट? सो इस तरीके से आसियान की इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए. नाउ द सेकेंड टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, इंडिया and the UAE hold talks on food security cooperation, right? So this is happening under the ambit of I2U2. ये बहुत important एक informal grouping we can say has been established between India, Israel, USA and UAE, right? These four countries have decided to come together in the form of a grouping named as I2U2, also being referred by some observers as West Asian Quad. जैसे इंडो पैसिफिक में एक क्वाड है, राइट, 4 कंट्रीज का, वैसे ही इसको वेस्ट एशिया में क्वाड का नाम दिया जा रहा है, राइट?
these 4 countries will cooperate on various issues focusing on economic cooperation, right? ये grouping क्यों बनाई गई है? Because these countries they want to leverage the benefits of economic cooperation, right? They want to strengthen their economic ties, and that is why they have established I2U2 forum, right? So under this I2U2 forum, they have decided to engage on various economic matters, right? They want to increase their trade, bilateral and multilateral trade. They want to boost cross border investments, right? They want to work on energy trade, जैसे UAE हमें और ऑयल बेचना चाहता है, यू कैन से, राइट? इज़राइल हमें और डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचना चाहता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, राइट? So in all the areas where economic cooperation is possible, that is where these 4 nations will try to work upon, right? So उसमें health issues पे भी काम किया जाएगा, right? Food security के issue पे भी काम किया जाएगा, and that is where India UAE have established, you know, they are trying to take forward the objective of this grouping, and they are holding dialogue on food security cooperation, ठीक है? सो इसमें से आपको बेसिकली I2U2 के बारे में ध्यान में रखना है, why this grouping is there for economic cooperation, and it is between these 4 nations with the overall objectives of strengthening economic ties, right? ये आप ध्यान में रखिए, बहुत यूजफुल है, इस पे प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है एंड मेंस पे भी बहुत हाई पोटेंशियल है, right? So it is very significant for India as it will provide India greater, stronger economic coordination with these 4, you know, the other 3 important nations. UAE, that is important for our energy security. Israel, that is important for our technological developments. Israel हमें defense के sector में technology दे रहा है, water management के sector में technology provide कर सकता है, cyber security में Israel is emerging as a leader. There also Israel can help India, right? So again Israel is important, and USA is always important for India as a major source of investments, trade, and a major source of global power, right? So that is why I2U2 is very significant for India, right? India UAE की आप trade ties देखें, they have been improving over the years, right? Even in the current fiscal, if you see, the exports have increased by 24% and the imports have increased by 38%, right? So India UAE के आप relations देखें, they have transformed over the years. UAE is emerging as one of the most liberal nations of the Middle Eastern area. That is why आप देखिए कि आप बहुत सारे अब made in Dubai projects अपने घरों में देखते होंगे, right? उसका रीज़न यही है कि इंडिया यूएई अपने ट्रेड को बहुत ओपन एंड सपोर्ट कर रहे हैं. दे हैव इवन एस्टैब्लिश्ड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, दैट इज सीपा. An advanced form of FTA has been established between India and UAE, thus reducing the tariff and non-tariff barriers in the bilateral trade. ठीक है? So restrictions जो हैं वो कम होती जा रही हैं, trade जो है over the years that is getting boost, and now they have also decided to work on food security cooperation under I2U2 forum. ठीक है? So ये एक point आप याद रखिए, right? Now this is the question that you can practice answer upon, right? मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है. यू कैन राइट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड पोस्ट इट ऑन अवर वेबसाइट. यू विल गेट द मॉडल आंसर एंड द करेक्टेड आंसर्स ऑल्सो विद द रिव्यूज, राइट? I hope this discussion helps. Thank you so much for watching.